सो फोकस ऑन कॉन्स्ट्रुअल, कैली की थ्योरी एम्फोसाइज करती है कि कैसे इंडिविजुअल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं द वर्ल्ड अराउंड देम, बट वन मस्ट बी केयरफुल दैट व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पर्सनल स्टेटमेंट. हमें इस बारे में भी केयरफुल होना ज़रूरी है कि वेन एवर अ पर्सन इज़ मेकिंग अ पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि स्टेटमेंट जो है इट इज़ रिवीलिंग मोर अबाउट द पर्सन हिमसेल्फ हु इज़ अटरिंग इट रादर दैन व्हाट द रियलिटी इज़. बिकॉज द ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप बेस्ट कंसिडर कर सकते हो एज द हाइपोथेसिस दैट दे आर मेकिंग. वन शुड नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ फैक्चुअल क्लेम टू बी एंडोर्स्ड और रिजेक्टेड. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट. पहले तो ये जानते हैं कंस्ट्रक्ट क्या होता है. सो पर्सनल कंस्ट्रक्ट इज अ वे in which some things are construed as being alike and yet different from others. Constructs are defined by identifying the distinction on which two objects are similar or different from a third object. Construct को आप बोल सकते हो कि they are defined by identifying the distinction on which two objects are similar. Construct are defined by identifying the distinction on which two objects are similar or different from a third object. कुछ फीचर्स हैं कंस्ट्रक्ट के, जैसे कंस्ट्रक्ट्स बायपोलर होते हैं हमेशा. एग्जाम्पल अगर इंटेलिजेंट का तभी पता होगा जब अनइंटेलिजेंट को देखा. Each construct has a limited range of application or a range of convenience. रेंज को ऑलरेडी में हम पढ़ेंगे भी कि हर एक कंस्ट्रक्ट का एक लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ही है, एक लिमिटेड रेंज तक ही एक कंस्ट्रक्ट जो है वो सीमित है. सो ईच कंस्ट्रक्ट हैज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. ईच कंस्ट्रक्ट हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और रेंज ऑफ कन्वीनियंस बहुत लिमिटेड होती है. द फोकस ऑफ कन्वीनियंस फॉर अ कंस्ट्रक्ट refers to the class of object to which it is more relevant. जो focus of convenience है for a construct, it refers to the class of objects to which it is more relevant. ठीक है, the focus of convenience for a construct refers to class of object to which it is more relevant. The focus of convenience for a construct refers to class of objects to which it is more relevant. So the focus of convenience for a construct refers to class of objects. जो ये construct में focus of convenience है उसमें like class of objects ही आते हैं to which it is more relevant. Now constructs differ in permeability or the ease with which they can be extended to new objects or events. Construct differ करते हैं permeability में, या फिर हम कह सकते हैं द ईज टू विच दे कैन बी एक्सटेंडेड टू न्यू ऑब्जेक्ट्स दे डिफर. द कंस्ट्रक्ट्स आर प्रीएम्प्टिव, दैट इज नथिंग एल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मैटर. कंस्ट्रक्ट्स प्रीएम्प्टिव होते हैं एंड नथिंग एल्स अबाउट दैट ऑब्जेक्ट्स मैटर. नाउ कोर कंस्ट्रक्ट्स आर सेंट्रल टू पर्सन सेंस ऑफ हु शी और ही इज. दीज आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू चेंज. कोर कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो सेंट्रल हैं उस पर्सन के, ठीक है, और रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं. सो दे आर सेंट्रल टू पर्सन सेंस ऑफ हु ही शी इज़. दे आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू चेंज कोर कंस्ट्रक्ट्स, जबकि पेरिफेरल कंस्ट्रक्ट्स लेस फंडामेंटल होते हैं एंड आर मोर एमिनेबल टू चेंज, और उनको चेंज भी किया जा सकता है बिकॉज दे आर लेस फंडामेंटल. कैली के फंडामेंटल पॉस्टुलेट और 11 कॉरलरीज को पढ़ते हैं. फंडामेंटल पॉस्टुलेट जो है एक बेसिक पॉस्टुलेट है जो एज्यूम करता है दैट अ पर्सन्स processes are psychologically channelized by the way in which he or she anticipates the events. So fundamental postulate is the basic postulate, assumes that a person's processes are psychologically channelized, कि एक व्यक्ति के जो भी processes हैं ना वो psychologically channelize होंगे by the ways in which he she anticipates the event. So a person's processes are psychologically channelized by the ways in which he or she processes or anticipates the event. So this basic postulate, fundamental postulate, assumes that a person's processes are psychologically channelized by the ways in which he she anticipates event. In other words, people's behavior are directed by the ways they see the future, right? तो लोगों का जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होता है इस तरीके से, लाइक हाउ दे सी द फ्यूचर. पॉस्टुलेट, ये जो पॉस्टुलेट है इट इज़ नॉट इंटेंडेड एज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ.
but it's like a tentative assumption that is open to questions in scientific testing also. तो इस postulate पे we'll come back. Let's talk about supporting corollaries first. पहली है construction corollary. So construction corollary basically state करती है that a person anticipates events by constructing their replications. एक व्यक्ति एंटिसिपेट करता है इवेंट को बाय कंस्ट्रक्टिंग उसी इवेंट की रेप्लिकेशंस बाय कंस्ट्रूइंग केली मेंट using the system of personal constructs to place an interpretation on an event where that interpretation gives meaning to the event. We'll continue with this fundamental postulates later on.